Match found. Warm up. Hello. Fight! ये हाय कैसे Brimstone's dead. Nice. Bad luck. Watching here. Don't get it. You're done. There. İyi geceler. There. Varsa olmaz mı? Ah be abi. Watching you. Hush. Idiot. İyi geceler. Caution here. Sleep. Watching here. Uh-huh. There. Too bad.
There. Kill set. Nice. You're done. Watching here. Nice, nice. Back off. On my mark. Embarrassing. Kill set. There. Hush. There you go. Enemy down. Idiots. Caution here. On my mark. Mickey, Boniva. Reloading. On my mark. Let's Sleep. clean up. We're done here. You're done. Too bad. On my mark. Bam. Yatasha. Embarrassing. Too slow. Stop killing me. आ रहा, आजा 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 आजा, जल्दी आजा। मैं जब तक रुका हूँ, आजा आजा। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी?
हेलो। हेलो। नाम वाम चेंज किया क्या? मेरे को नहीं लगता भाई तू जानता नहीं। हम्म। मेरे ख्याल से तू नहीं जानता है मेरे को। नहीं जानता हूँ तो फ्रेंड लिस्ट में है। कैसे? हाँ, अरे वो पहले कुछ और नाम था, क्यू टी कुछ करके था। अच्छा अच्छा। ओके। एक और आ रहा है। कॉम्पी। हाँ कॉम्पी खेलेंगे ना। आ रहा है, एक और आ रहा है। चालू करते हैं। ठीक। ठीक है। हम्म। नहीं जानते हैं किधर गया। भाई जा जल्दी, किधर चला गया? हाँ बाबू, क्या हाल है भाई? कहाँ पहुंच गए तुम? आ गए क्या भोपाल? आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है क्या? भोपाल आ गया। अरे यार, देखते हैं यार। किधर किधर चला मैं, किधर चला। भाई लाइक तो कर दो, हराम दो। बैठ के देख रहे हो। कितनी देर लगेगी भाई, आ रहा है कोई? आ तो रहा है भाई। बोल तो दिया है जब उसने। जब तक वो आएगा तब तक अपन एक गेम खेल के आ जाएंगे शायद से। नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, अगर आप आई क्या देख। बट तू खेल नहीं पाएगा भाई। लेट है तू। वो सिल्वर है। तो अपन दोनों खेलते हैं ना, सिल्वर वाले को बाद नहीं, में मेरे पकड़। को उसके साथ खेलना है ना, मैं उसको जानता हूँ ना, पड़ोस में बैठता है। अभी आके मारेगा मेरे को इधर से। फिर सिल्वर के साथ डी रैंक करेगा अपने आप। अबे वो डायमंड है, मेरे साथ खेलने के लिए आईडी स्विच करके आया है। तो उसको बोलना डायमंड से आ जा, अपन 5 स्टैक कर लेंगे। तो सिल्वर से खेलने तो उसको 5 स्टेक होना होगा तो हो जाएगा। तेरे पास कोई आईडी हो तो उससे आजा, गोल्ड से। नहीं भाई, गोल्ड की कोई आइडिया नहीं है।
चल तू खेल पे जाता हूँ। ठीक है भाई। अजीब प्रजाति है। इसके चक्कर में भगा दिया है उसको मैंने, और अगर ये नहीं आया तो छोड़ जाएगी। क्या नाम है? alert positions, affecting the team's macro in these late rounds. I want to see PaperX being proactive at re-clearing space, flushing out these lurks, not letting Spring get away with the shenanigans he's been up to all tournament. Yeah, and at the same time, you have to think of what Wolves have to care about. Something, if he gets on with that operator easily, they're going to have a very good chance of snowballing this defense. That's the scary part, right? If he's able to get that op online, you need to shut him down. Otherwise, he will run roughshod all over you there. He absolutely will. So much pressure for these Wolves players. The style that they play, that slow, structured Valorant. I think it befits staying calm in these situations, but GB, this is going to be a big one for them. Oh yeah, Toronto! Are you ready for the upper bracket final? And let's go ahead and send it over to two of the greatest of all time on the mic. It's Pansy and Hypoc. Thank you so much, GB and the desk. Yeah, Mike, I think we have to kind of touch on what the desk was talking about there. This stylistic head-to-head is something to be excited for. And it is, yeah. It's almost, I mean, talking in the lead up to this, talking about a similar play style, but actually PaperX almost have the recipe to break apart what Wolves have kind of made the cornerstone of their playbook, right? This slow creeping default, looking for a gap somewhere. PaperX are the team that time and time again are able to come up with ideas on the fly to really disrupt that sort of gameplay. And again, for PaperX, I feel like everyone's looking like they're the underdogs in this. Oh, which is crazy, right? Hey, do you not remember them in Champs Finals? Yeah, they lost it. I mean, the perennial second-place team, sure, but they are a Grand Finals quality team. They have to prove it once again today. Up against probably मैं तो मैच देखने लग गया था, मैंने सोचा कि story run we've had in a long time. उसका मैच ही देख लेता हूँ और बहुत ही खराब बहुत ही खराब है। पता फर्स्ट टाइम लोडिंग में तो जब से तेरे को मैसेज डाला ना, जब से अब जाके चालू हुआ है वो। भाई जब से तेरे को मैसेज डाला तब से जाके अब अनरियल 5 पे कर रहा है ना ये गेम को, इस वजह से। अरे पर इतना टाइम बहुत हेवी हो जाएगा गेम अभी अनरियल पे आने के बाद। मेरे को एसएसडी इंस्टॉल करना पड़ जाएगी भाई गेम खेलने के लिए। कर चालू कर, मिनिमम लगेगी। किसी को बुलाता मेरे को तो लगा था कि गेम वो करने लग गया था, मैं गेम देखने लग गया था। भाई क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा खराब है, मतलब गेम का तो बहुत ही ज़्यादा। एक आ गया था, वो बोल रहा था सर उसको भगा दे, अपन दोनों खेलते हैं। फिर मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरा दोस्त है, ऐसे मैं भगा नहीं सकता उसको। वो मेरा जिगरी है, तेरे को रख लिया। फिर मैंने बोलता अरे उसको मत खिला, डीरेंग होगा। मैंने बोला फिर भी खिलाऊंगा मैं। बोलना वो कितना भी अच्छा खेल ले, वो आगेगा मेरे साथ में आके। मैंने कुछ भी करे, मैंने बोला क्या करे, बेटे को ऐसे छोड़ सकते नहीं है। अरे कैन डू लेजिट एडिट वेडिट कर लिया करो टाइम से, रात में बैठ के गेम खेलने के टाइम पे सभी हरकतें करते हो। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ पीछे भी अब है एडिटिंग का सॉफ्टवेयर भी खुला हुआ है, एडिटिंग का दोनों चीजें साथ में चल रही है, इसलिए तो गेम चालू नहीं हो पा रहा था। नहीं अभी तो चालू करा है मैंने, चालू होने के बाद चालू किया ये। भूख लग रही है, वो समझ नहीं आ रहा है। खाना खा लिया है मैंने। खाना खा लिया है, भूख लग रही है, चाहता क्या है तू? मेरा शरीर क्या चाहता है वो मेरे को नहीं पता है। मैं तो खा चुका हूँ मैच फाउंड, बट भूख फिर भी लग रही है। ऐसा होता है बहुत बार ऐसा होता है। एक तो साला मौसम भी ऐसा है कि बाहर निकल नहीं सकते। क्या लूँ यार, क्या खेलूँ? क्या? 1 मिनट, 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 1 मिनट
कुछ भी खेल ले जो तेरा मन हो। हेवन आया है ना वैसे भी। हार्टलेस। तू संभाल लेगा ना? क्या पता। मैं ऐसा कुछ लेने का सोच रहा हूँ। देखो जो लेना ले ले, तू ब्रेक के बारे में सोचता है क्यों? तो गेम खेलते खेलते कितने साल हो गए बता मुझे। नहीं गेम नहीं, मैं कैरेक्टर के बारे में सोचता हूँ। कुछ भी ले ले। ऐसा ऐसा कुछ खेलूंगा यार, मजा आएगा। कुछ भी ले ले, कुछ भी ले ले, तेरा जो मन। इसको खेलते ही नहीं देखा मैंने, बहुत कम लोग खेल रहे हैं। क्या को किसको खेल सकते हैं भेजो को? चलते को रिवाइव दूंगा मैं। हाँ ठीक है, तू ये कर लेना। यही करेंगे। ये कर लेना तू। ओ भाई मजा आने वाला है। जियो बेबी, जियो बेबी है ये, जियो बेबी। आज फ्राइडे है ना, कल सैटरडे। सैटरडे चल रहा है क्या भोपाल? कब? कल? हाँ नहीं। चल तू सुबह मेरे को वापस आ जहाँ जाएंगे जाने के लिए बोल देगा ना, मैं हैं? माँ के लिए तेरे को मना कर दूंगा, ये तेरे को पता है। कहाँ? तू मेरे को जहाँ बोलेगा ना, मैं तेरे को वहाँ जाने के लिए मना कर दूंगा, तेरे को पता है ये। क्यों? पैसा नहीं है? तेरे को मेरी हालत पता है अभी। हालत तो मेरी भी खराब है, बट चल सकते ना। 1000 रुपया खर्चा कर सकते। 1000 रुपए? अच्छा 450 जाने का, 450 आने का। बीच में पोहा खा लेना पप्पू पे, 50-50 रुपए का आने जाने में, बस। और क्या लगेगा? सही बात तो सही कह रहा है तू। एक कॉल आ रहा है, एक सेकेंड। We will not withdraw हाँ सर। until their radionite गुड is इवनिंग। ours. बढ़िया है। Reloading. Scanning ahead. Concussing! There they are. One dead. Cover going out. Shadows traveling. कहाँ से? कुछ भी। तेरे पेश कर दे। Shot that. Light planted. One enemy remaining. One step closer. Revealing area. इधर आओ इधर। Reloading. Healing. Reloading. Shot that. दूर बाजलो यहाँ से। My ultimate is not. Barrier here. Last player standing. Spike down B.
fears you, Reyna. You can use that. Reloading. I have the spike. Spike dropped. Enemy spotted. C. Got the spike. अरे यार मारो उसको 83 Our भाई spike is down. Spike down. C. वीडियो करना पड़ जाएगा Last player standing. और क्रॉसर You fought well. भगा के देगी दिख गया राइट में कहाँ जाएगा You baby. You baby. Their omen may be a nightmare, but I was never scared of the dark. I'm saving. Gun here. Concussing. Enemy spotted A. अरे यार इसका ये मेरा क्यों नए कीबोर्ड का ये क्यों नहीं काम कर रहा Spike dropped. I have the spike. Last player होता standing. है इसमें Spike down A. No match. होल्ड स्कोप होल्ड Watch them run when lit by my sonar. That's when we strike. Reloading. Reloading. Enemy spotted. अरे मत Scanning ahead. क्यों मर रहा हूँ मार मार Reloading. टाइम टू गेट टाइम Too late. My ult's ready. Shadows traveling. Stealing sight. Cover going out. Sleep, brother. Silence. Spike planted. One enemy remaining. Not one left. Trevor! We doing this or what? It's time to phantom the beast.
Reloading. अरे माइक खोलेगा जल्दी. We go. Concussing. Flash out. Cover going out. Our spike is down. Shadows traveling. Spike down A. नहीं क्यों मर रहा हूँ? Reloading. उठा दे मेरे को उठा दे मेरे को उठा दे मेरे को उठा दे मैं वो आगे से उठा दे उठा दे उठा दे उठा दे उठा दे उठा दे. Your duty is not over. चल गया फिर से. I have the spike. Shadows traveling. Blinding. Planted. Enemy spotted C. Watch them run. Last player Enemy standing. spotted B. Come on, get me in the line of fire. ये क्या करूँ मेरे पास बाय नहीं मिल रहा मेरे को. Reloading. बहुत सिर बड़ा करो. Hold it up. Let's play slow. Let's play slow. Revealing area. Fall back. Fall back. Fall back. Fall back. Fall back. Spike down A. Fall back. I have the spike. Let's play slow. 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 Die. Thirty seconds left. Gone. नहीं मैंने पूरा एम उसके सिर पे रखा था. Ten seconds left. Carrier is dead. Spike down C. Recon. I know Let's play slow. what must be done. Reloading. I need this. अब इनकी तो दुखो. Overtake them. अब गए अब ये गए अब ये गए. Blinding. You want to play? Let's play. Enemy spotted. C. अरे मैंने क्लिक भी कर दिया. Stealing sight.
Barrier created. Cover going out. Here. Spike down C. One enemy remaining. Cover going out. I have the spike. It is done. Level heads until we're home, yes? Good. For you, hermanita. Cutting their vision. Shadows traveling. Shadows traveling. Wall raised. Planted spike. Enemy spotted C. They will come. Flash out. Reloading. Careful there. Shot down. Dusted. The rush. Last player standing. Spike down. Attacker spawn. Taken out. One enemy remaining. I have the spike. हेलो आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आवाज। हाँ कॉल आ गया था एक। कितना लंबा चल रहा कॉल पे तेरा? प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आया नहीं। वो सर का है 10 क्या? seconds वाला left. सर का है क्या? पुराने। ये क्यों नहीं प्लांट किया इसने? भाग गया वो। पता नहीं यार मेरा एम तो बहुत गंदा चल रहा है इसको समझ में आ गया। खेल कैसे रहे हैं लोग? या तो फिर मैं भी प्लेट वाली आईडी से ज़्यादा ही बोर मार रहे हैं लोग। है क्या आईडी से आता है? प्लेट से आता हूँ मैं भी हाई लॉबी में खेलता हूँ। हाई लॉबी मेरे लिए तो हाई लॉबी दिख रही मेरे को तो। गेम सेंस में बात कर रहा हूँ भाई एम तो एम की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। भैया बाय देना थोड़ा सा। एम में तो मेरे को कोई उम्मीद ही नहीं है कि मेरा ही नहीं चल रहा है। तो किसी और तो क्या ही हो चल। मेरा भी नहीं चल रहा ना यार तो। Come here. Unavoidable. Wall raised. अरे मत करे भाई। तो बहुत जिसकी खाना करा रही है। Spike down mid. Come ये here. लोग कहाँ क्या मरवा रहे हो? तो स्पाइक मेरे पास क्यों होता है हमेशा? ये लोग बात नहीं मना कर रहे करने के बाद पहला पैसा मैंने निकाला भाई से शेरिफ से। Stealing sight. Shot that. My ult's ready. Got the spike. Spike planted. Last player standing. तेरे बिना जिया मैं
Enemies close. Eyes up. Reloading. अबे दोनों की हालत सेम है साले। तू क्या कर रहा था? मैं तो कॉल होने के बाद 3 किल कर लिए मैंने। भाई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। जो आ रहा है बजा के जा रहा है। आ जाओ रो इधर आ जाओ। ए पे ऑपरेटर से पीक लेता है वो चूतिया। गैस करूंगा मार देना। चलो भाई चल ले दे गन पे। Scanning ahead. Found them. Spike down A. मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरे को भी चेंबूर Cover going out. Spiked A. Tremor. Still in sight. Clearing out. Flash out. Joke's over. You're dead. भाई उसको 175 में मार दिया मेरे को। Last player standing. ब्लाइंड देखो। ब्लाइंड लाइन तो ठीक है भाई, वो पता नहीं कैसे क्या मर रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अबे क्या मुझे गन खाली करके खाली गोली वाली गंदे दे रहा है ये ओमन भाई। बेटी तो खाली करके गन देता मुझे ये। Last round before the switch. Spend everything. We keep nothing. I need a drop. बाय दे दे अब शांति से वेंडल का। हेलो। हाँ सर। तू भी मराएगा? आजा। पीछे घूम। Through the calm, I see. Through the storm, I fight. I have the spike. Spike dropped. Got the spike. Landing. Blasting. Spike dropped. Your duty is not. You want to play? Let's play. वहाँ का भरोसा। Last player standing. Thirty seconds left. Switching sides. As much as this You have hurt me. It's mine, and I will kill to defend it. I have your back. A. Shadows traveling. No charges left. Barrier created. Spike down A. Cover going out. गिराज के अंदर भी है। Enemy spotted A. ये अरे उधर कहाँ पहुँच गया वो? वही तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो कोई हिल तो नहीं चाहिए? नहीं। मेन नहीं देखा, मेन से ना आ गया वो।
यूरो दिखा नहीं बहुत देर से। तेरे पीछे तो नहीं है? अबे स्पॉन से आएंगे ये लोग, मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरे को कर क्यों रहा है? अरे यार ये 1 by 1 मर रहे हैं। इधर आजा, मेरे पास में खड़ा है। ठीक ले रहा हूँ, ठीक है। ये पीछे से आएगा, पीछे से आएगा। 30 seconds left. पीछे से आएगा। एक तो आया। One enemy remaining. नो आइडिया इसका किधर है। देख रहा एक चुरा ले इसका स्पॉन पे है वो। चुरा ले बेटी चोद। अनकस का है क्या? Leave it to me. I'll rough them up. ये कौन चला गया? अरे वो मतलब होता है कभी कभार हो जाता है वो। क्या करना है? जीतना है? चिंगना हिलाओ से, थोड़ा सा दूध पिलाओ से। क्या बोलूं मैं? याद देख रहा है, साथ से चूंटी भर लूंगा चूची पे। देख सारी उखड़ाएगी बाहर। देख तू एक बार। अरे पहले हाथ देख भोसड़ी। अरे सुसरे मरवा दिया। नाइस। एक और होगा। We turn to dust. खिड़की विंडो यहाँ पे, विंडो पे तेरे पास में। One enemy remaining. जीतना चाहे। एक गया बे, एक गया अपनी टीम से। एक उनकी टीम से भी तो गया है। 4v4 ही तो चल रहा है। नहीं अपनी से गया है। अरे मैं मार के आया ना 2 बार उसको, AFK को। अरे तो उनकी टीम से गया थोड़ी ना, AFK थोड़ी ना है वो। अरे वो खेल नहीं रहा है, खड़ा है वो चुपचाप। खड़ा है, वही तो मैं कह रहा हूँ, खड़ा है। हाँ तो उसको फायदा नहीं हो रहा ना, उनको अपने को फायदा हो रहा है एटलीस्ट। समझ रहा है? प्लांट हो रहा है। कहाँ पे प्लांट हो रहा है? सी पे। Spike planted. Here we go. Flash out. सारी एबिलिटी दे Enemy spotted. C. Still inside. बे गंदे बे। Blinding. मोडी नहीं चला ले, अल्ट मार ले। Last player standing. अरे नल्ले आदमी अल्ट मार ले बोल रहा हूँ। अरे अल्ट क्या करूँगा मार के, जब मर ही जाऊँगा मैं। स्प्रे फास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? इतना है क्या? गन की बुलेट की स्पीड तेज हो जाती है। इतना सा समझ नहीं आता आपको? अरे पेपर एक्स दिख रहा है। सेज की चिट्ठी खिंचवाओगे? Wall raised. I got enemies. A. Spike down A. बी पे थे, बी की तरफ से आ रहा है। Spike is A. ये इसके चक्कर में मैं क्यों जाता हूँ यार? तू मरा कहाँ है? तेरे को रिवाइव कर सकता हूँ? मैं तो पीछे मरा हूँ। रिवाइव है क्या तेरे पास? ये नीचे में मरा हूँ। नीचे में मरा हूँ। नीचे में ये नाले में मरा हूँ। तू टपकेगा, मैं लास्ट टाइम तेरे को उठा दे, मेरे को उठा दे। जरूरत है उठाने की, बस मर नहीं जाऊँ। Your duty is not over.
चलो चलो यहाँ से चलो, कोई मतलब नहीं यहाँ पे। एक प्लांट कर देगा अभी आगे जाके, ये देख। You're dead. उसी के पीछे स्लाइड करके मार दूंगा। हाँ, कॉमन सेंस है भाई। 30 seconds left. Eliminated. देखो फिर से रिवाइव चाहिए क्या? अब कहाँ से देगा तू रिवाइव निकाल के? एक राउंड में 5 मार के रिवाइव देगा क्या? और क्या? Ten seconds left. Spike planted. प्लांट भी कर दिया। Shadows traveling. एक ही है। They had no right to do this. ये FK खड़ा है पता है? Even with numbers, anything can still happen. Remember पता है that. अपन जीत सकते हैं। जीत तो सकते हैं अपन। चला ना ऑप चला, कुछ और अच्छा चला, गन ऐसे क्या चला रहा है? मेरे को सिर्फ डब्ल्यू दबा के किल लेना, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं करना। I need a drop. Fight! दियो डिस्टेंस दियो। Wall raised. Blasting. ये अपने वाला को कर रहा है क्या? For you. Blinding. देख भाई वो लड़का कर करके कहाँ से मार रहा है। Spike planted. ये दोनों cover going out. खेल नहीं रहे ना, सही से थ्रो कर रहे हैं। Cover going out. Blind. देखो सिर्फ 2 को मारना है। To dust. जा जा जल्दी जा। My ultimate is One enemy remaining. FK जल्दी जा। अरे यार तेरा कोई फायदा ही नहीं मारने का, हट नकली आदमी। Time to take these arms for a spin. मैं तो अभी भी 5 लोगों को 5 देख के समझ रहा हूँ, चल रहा हूँ। मैं देखो अपडेट कर रहा हूँ ना बार बार। हाँ दे तो रहा है तो अपडेट। ये चुपचाप शांति से दोनों खेल लेंगे ना। पता है शायद गेम जीत भी जाए अपन। भरोसा नहीं। I will hold up the जीत sky. जाएंगे, शायद जीत जाएंगे, शायद। नो आइडिया पर हो सकता है। Barrier created. Joke's over. You're dead. पता नहीं किधर लिया इसने ओमेन ने टीपी। Spike planted. प्लांट भी कर दिया, टीपी प्लांट कर दिया। दौड़ते हुए जा रहे हैं तो प्लांट के लिए। उसे 1 2 3 आजा। Enemy spotted C. No charges left. No charges left. My ultimate is ready. Last player standing. लेफ्ट। अरे यार मैं बोला लेफ्ट देख रहा था, राइट भी देख रहा था। दोनों मर गए चक्कर में। मैं तेरे को रिवाइव करने का सोचा रे, टाइम ही हो गया। हट। नहीं रिवाइव नहीं कर। मार मार बस मार। निकाला तो सही, 3 सेज को निकाला, फिर इधर ओमेन को भी निकाला। वो मेन ये लोग एक तो इतनी दूर दूर मारे कि मैं रिवाइव ऑपरेटर लगाता हूँ। रुक जा, इसकी तो सी पे ऑपरेटर लगाता हूँ। हटाओ इसकी तो बहुत हो गया। अब देख मार, एक और गया। ओमन भी डिस्कनेक्ट हो गया। ओमन भी डिस्कनेक्ट हो गया क्या?
ओमन डिस्कनेक्ट हुआ, वो सोवा आ गया। Barrier here. आजा आ रहे शायद यार। अरे यार क्या बंदा है भाई, बी के बाहर ही बैठा हुआ है इस बार। You will not kill my allies. क्या पाओगे मैं तो? चले गया यार, हट। आएंगे नहीं अब वो। ये देख इसको देख, अलग ही मस्ती कर रहा है ये। बच्चे आ कैसे जाते हैं मेरे को समझ नहीं आया बिल्कुल भी। सिल्वर लॉबी बच्चे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? कुछ नहीं कर रहे हैं लोग, तीनों खड़े हैं। 30 seconds left. इसको भी मार देता मैं, पता है उसको भी मार देता। Spike planted. ये भाई चूतियों की टोली तो है अपने साथ। केंदी चूतियों की टोली ही केंदी। नहीं जीत सकते, अब तो नहीं जीत सकते। Last player standing. जानबूझ के नहीं खेल रहे ना, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ ऑब्वियसली। Match point. What will it be this time? Have any patterns emerged yet? तेरे पास बाय बचेगा क्या? बाय कर देती। इसको बाय दूँ तेरे को? रन दे। इतना थ्रो करा, थोड़ा और थ्रो कर देते, एक राउंड और थ्रो कर। You want to play? Let's play. साउंड है क्या तेरे पास? इधर आ गए, ये आ गए, ये आ गए। फुल डब्ल्यू है। मेरा क्यों नहीं पड़ा, उसका पड़ गया। खराब का दिया। Spike planted. Last player standing. Attackers win. चलो तुम खेलो भैया, हम जाएं। चल ठीक है, बाय। बाय। Juicy, but then to find a second, the showstopper comes through. That splash damage. I can't believe that even catches on Jing. Outrageous scenes here. Are you starting to believe now? The way this half started, I thought it was going to go kind of par for course, right? What you'd expect. But the Wolves, once again, proving they are lethal about their business. So we go again. Money not looking good for Paper X. It's Stingers, it's a Sheriff, it's a Bulldog. Brought together from the bargain bin basically here. Can they make something with it? Ooh,
little bit of chip on the way. Position now noted. Zufat BB on the site here. Still got C's and his Prowlers, but they are fast and his Lightsaw caught sleeping. Not expecting the pace. Juicy, a wild play through the smoke. Gonna find two, but Spring's now here. It gets a bit messy, but it's working out, at least for now, in Wolves' side. Not great here for Pac-Man, though. Oh, do you really go for that? No. He certainly doesn't feel safe to just stick the plant out, so they're waiting for something. Does have the ultimate here, but again, the 2v3 doesn't feel good. And that chip on Pac-Man 2, they're starting to feel it. Something's going to have to go nuclear. Try and save the day, but none of these fights, these engagements are fair for him. YU does well, leaving Pac-Man with 21 HP, and not a prayer to be had. Wolves again now, round by round, taking this away from PaperX. A hit, 11 here. This is God getting into some really awkward territory now. You can see this is effectively a force up here. Ultimates are plenty. Talking about some of those defensive ultimates here for Wolves. See how it lies here for PaperX. This is going to take up the lion's share. Obviously, the round loss bonus is going to be a consideration, but could potentially face Wolves here on map point on a broken buy. On PaperX's map choice. Yeah. Yeah. It all starts to compound here, but they're not there yet. 4 in a row, unanswered. Alt starting to build, money looking solid. We're gonna need a PaperX round. Who's next? Gonna need someone to step up, and it looks like something wants to try and trailblaze his way forward. Good info. 2 spotted, and the rest now filling behind that. So whether or not they were trying to set up for potentially a paranoia there. Oh, the paranoia was fine on one, but it doesn't quite Juicy. Still standing, still breathing. Forsaken gonna find the trade out towards Lightsaw. Nice from PaperX. Unwilling to relent on the site now. Spring and what? Oh my God, what a shot. Couldn't get the second. Forsaken wants this. YU, a 1v3. This would be something special. But a lifeline for PaperX. Jump spot towards Street, that's from Divide. Time's been bought, couldn't get the punish fast enough. And now they know the position. The cross should be the death of YU. I say should. Yeah, they're not giving him an inch here. Very well handled by PaperX in the end. They had to keep their cool there. Almost a lifeline here in terms of the bigger picture. Brings it within 1. Not allowing Wolves to really sit back on their laurels and rely on these ultimates. Get so sloppy on that first kill. The paranoia almost setting things in motion, but Forsaken just heroics there. Yeah, just absolutely bulldozing his way onto site. Those were your last words. Wolves at late timeout in the half in the map, round 22. Comfortable financially, so he's still got those ultimates actually building back towards Juicy and Fat BBs. Almost a stacked deck here in terms of this cycle. Yeah, it starts looking a bit scary, and that Jing's 2 away from his. Forsaken 1 off and 2 away from Patman's, but as I said, this feels like we're getting really... Well, again, you think about it as well, if you don't invest these ultimates early on, you never really get a clean 5v5 retake versus PaperX, because they'll find a plant, but they'll also, more often than not, push towards spawn, try and find a kill, weaken that setup. So if Wolves do have any kind of set pieces around these ultimates, you're really looking towards Spring and YU to mitigate that risk and sit deep enough where you're not really going to be able to rely on it too much, but said PaperX, they're a team that reads into that sort of thing so well. Well, I'm probably going to see a paint shell. I imagine maybe a C's perhaps, who knows, but you're seeing the way that PaperX want to pass. Well, first time actually the stars align for a fight towards Rubble here. God, this could be right off the rip. Here we go. Already paint shell comes in, C's not going to find it, but the reveal is fantastic.
Juicy gonna go down. Forsaken doubling in. This is lovely from them. Down. See if a baby does answer back in kind, but PaperX aren't stopping. They want the site. And yeah, beautifully done by something. Yeah, that's stunning. Almost singular in approach, just banking on themselves. I mean, what Plant coming through with 120 left on the clock, it's a haymaker thrown from PaperX and it lands once more. Similar to those early rounds we did see in the second half. This shouldn't be possible. A 1v3. It shouldn't be possible, and it isn't. Something in the end to add the full stop to that sentence. But it is 11-11, Mike. PaperX have found what they needed. But it's getting close here. The money's still in place for Wolves. And you're looking at those ults, they become such a heavy factor, but this reveal was everything. Lysor, unfortunately, still in the committed position. Seeing Fat BB, unfortunately, I guess, just caught off guard by the flash. Tried to turn it, but even so, you connect that first shot, you've got 2-3 more members of PaperX staring you down. PaperX maybe feel as if they found the recipe here. Slower approach this time around. No resistance shown early on, at least, from Wolves. Exploration elsewhere. This is both YU and Spring, though. Spring's going to continue pushing forwards. Might even catch Divine Spawn. Yeah, trying to almost sell this fake, but Divine completely unawares. They hadn't seen this sort of look before, but if anything, it encourages his approach towards A now. Jing does have the showstopper as well, though. Yeah, this is going to get tense. Both players stuck on the back of the side now. Ready for the swing, but not ready for the shot. Lights or handles Forsaken, waiting for the pop of the Olin. Jing's landed it. 3v3 now. Tension rising. Something holding the push through the door on the other side now. Rewarded. Nice from him. Man advantage and Plant next on the cards. See the lockdown invested here. A 2v3. The response comes through from Patmen, but PaperX gonna get to fight this. YU's found one. Yeah, beautiful from him. They've got to react to it now. Something, it wasn't clean enough. And Jing, what do you do? He's caught. What do you do? They can just stick it. Yeah. I can't believe it. YU just has to hold guard. And for Jing, he just has to stand back and watch as the 12th gets taken away in the final hour of regulation. Wolves take the lead. See here, the purchase gonna be rough for Wolves, but they find that response, finally finding the opportunity to invest the lockdown. I mean, it's another situation where you just see Forsaken again, just digging so deep. Jing hitting the drive-by as well. Zach kills one with a follow-up here onto something. This is one ultimately that can bail Jing out in that situation. They're coming into this though. Wolves still have a pit, still have a showstopper. Big tools to work with here in round 24. The moment of silence will drop. PaperX poised now. Cover going out. Once again, it's like actually a big info there. Catch him drifting away here, not necessarily looking committed. It being Jing, obviously, the tip of the spear on some of these set pieces, but PaperX are actually going to contact up. And it all feels like the calm before the storm. Wolves almost scratching their heads here. They invest the pit over, expecting maybe that with that information, PaperX are rotating towards C. There's the info, but are you ready for the hit? How do you play it for Lysor? Oh my god, he's going for the heroics. Oh! He went for the heroics and it worked out for one. Not going to get a second as PaperX now finds stability on the site. Into the post plant, something playing a little further ahead. He wants a one and done and back away. No one's given him that yet though. And the time ticking for PaperX here. This is good for them. There's still ults in play though. Juicy has his. You've heard that invested. Flies on the site, but something does well. Gets one back. The showstopper does one. Wait, something got lost. And a trade for Spring. It's into a 2v2. It ain't over yet. You're looking at the post plant for Divine and Jing here. Can they hold on to this? Paint shell posted by some seconds. They needed to stay alive. Divine digging deep. And they're not dead yet. They're not done yet. You should have killed them when you had a chance. PaperX bringing it back to
12 apiece. Of course we see overtime here on the first map of this series. An insane exchange here throughout the second half. And PaperX just showing a brazen approach. No fear. Almost their trademark game plan here. But Wolves, I gotta say it, seemingly up to the challenge. Everything gets reset now for round 25. Those ultimates will be reset as well. I mean, Wolves in a perfect position to close out now, but back onto the attacking side. The timing's going to be critical on this. They've read it. They've read it really well here. Same piece we've seen previously. And it worked out well for a 2-for-2 trade in the end, but this time, Jing, something in unison. They're not going to let him even have a chance into this. Denied from the very word go. And Wolves want back in. They're taking the fight. And he can't do that. PaperX locked in on this. A 4v2. They should find stability, Mike. But Wolves look unwilling to back away. They don't want to go elsewhere. They're expecting PaperX to rotate away from this and give up the space, but PaperX reading this perfectly. Still got both extremities controlled as well, so. It's so difficult. They need a freebie. They need something, and it ain't happening. PaperX looking sharp here. Right read, right place, right shots. We'll draw first blood this set piece once more. The back of the season. This time around, no casualties, no trade found. Enemy spike down. Able to stick the landing. Wolves to call a timeout here. Ahead of the second round in overtime. So impressed by PaperX's mental here, though, because they've been put through the ringer on this. Again, it's pressure on them more than anything, right? If you're Wolves, you've already done more than expected. Looking in fine form today. But yeah, again, usually with Wolves, you'd be talking about, you know, this unknown quantity and, you know, hard to read and stuff like that. The fact that we're talking about actually there is some familiarity between these two teams, it makes it a little bit more interesting because we've seen kind of counters to both approaches. Yeah. PaperX showing they're able to dismantle those defaults, and Wolves also looking as if they're very adept at dealing with early round aggression. And I'm with you on that one. Again, you look at PaperX, they are a legacy team here, right? And they have that one destination in mind, that final stop. The Wolves standing in their way of that grand final. And it's down to the wire between these two. So we go again. Similar scenes, it looks like, right? It almost looks like rinse and repeat, but Jing this time is fast. Oh, and he does get it! Sure. Lysor has gone down. It looked a little labored, but YU swings in. Oh, he gets a second! Hold on, PaperX, held back here now. Spike just behind the wall as well. Not necessarily a comfortable push out here. That's for both Wolves players. to control. Yeah, Divine and Forsaken. I have the spike. Will be given an opportunity to reset a little bit here, but find themselves in a 2v3. Oh, I thought they were leaving Divine there. God. Shadows traveling. So no paranoia. Going to be a little gap on a follow-up smoke here. Spark comes through. Juicy still got satchels. Spring still with a snake bite, so a couple of tools here at Wolves' disposal. Oh, it's so tense now. You're going to need someone to over-deliver, and they do! PaperX take it deep, and Spring can't stand! PaperX, it took so long to get there, but that legacy team holding strong on map one. Let's
standing pistol round, huh? Why you never stand up? Nice! Nice! Dude, he's legit NPC full, they should take him.